So great and hello and welcome everyone for this one of the very interesting video out where a lot of students are confused regarding what to prepare for SPOM, how to prepare for it, and what all things are needed when you're gonna be selecting the centers, क्या common mistakes हो रहे हैं, and what are the frequently asked questions in the paper, and which all topics you need to focus so that you can score good marks, right? So here I have invited two of my students, those who are also going to be guiding you. राइट बट बिफोर वी गो फॉर अ गाइडेंस राइट आई ऑल्सो वांट टू शो यू द पोर्टल आउट काफी लोग को पोर्टल भी नहीं पता कि कैसे ऑपरेट करना है क्या क्या चीजें उसमें ध्यान में रखनी है राइट तो जो भी इस एसपीओएम के लिए अभी एग्जाम देने वाले हैं या जो बाद में नवंबर में देने वाले हैं और आगे देने वाले हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स नाउ वंस यू आर गोना बी लॉगिंग आउट टू द पोर्टल आपको इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड दिखेगा राइट जहां पे आपको एक डिटेल के स्टडी वाइज आपका सेट ए सेट बी नाउ जो भी आपका सेट है सेट भी अप्लीकेबल है डिपेंडिंग ऑन द अटेम्प्ट व्हिच यू आर गोना बी अपेयरिंग फॉर तो से फॉर एग्जांपल मुझे सेट है देना है तो मैं सेट पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे बेसिक डिक्लेरेशन आ जाएगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है वो सब आप एक बार देख लीजिएगा राइट वंस यू डू इट आउट राइट यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे रिलेटेड टू द ईच रिस्पेक्टिव लेक्चर एंड सेशन आउट तो आप जैसे ही अंदर क्लिक करेंगे आपको उसके सब मॉड्यूल्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे एंड वंस यू क्लिक हियर यू विल बी एबल टू स्टार्ट द वीडियो फॉर द सेम ठीक है तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे तो यू नीड टू कंप्लीट दिस एंटायर वीडियो आउट विच इज देयर इसमें एक बुरी चीज ये है कि यहाँ पे अंदर स्पीड लिमिट नहीं है इंक्रीज करने का राइट जहां पे आप अंदर जाके स्पीड लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स जो सीए स्टूडेंट्स होते हैं हमें तो आदत होती है 2x 3x में देखने का बट दैट इज देयर तो स्पीड लिमिट का एक आपको प्रॉब्लम लग सकता है राइट कुछ स्टूडेंट्स पास में एक्सटेंशन यूज कर रहे थे तो काफी ज्यादा इश्यूज आ रहा था तो रिकमेंड है कि आप यूज ना करें राइट बिकॉज बाद में फिर इशू आ जाए तो बेटर यू शुड नॉट यूज दिस आउट राइट इसमें पैरेलली आपके वीडियो ऑन करके रखना पड़ेगा बिकॉज जैसे आप करेंगे वहां पे पॉपअप मैसेज आएगा कि योर वीडियो शुड बी ऑन इफ इट इज नॉट ऑन तो आफ्टर 2 मिनट्स 3 मिनट्स वो वीडियो आपको स्टॉप हो जाएगा तो ये बेसिक डैशबोर्ड है आपको ये कोशिश करना है 100% कंप्लीट हो जाए राइट वंस दैट इज डन तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्लिक हियर फॉर सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट विच इज देयर तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक दूसरा पोर्टल ओपन हो जाएगा वेर यू नीड टू अगेन लॉग इन इट आउट एंड वंस यू गो हियर यहाँ पे आपको एक सिट सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा राइट तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे आपको एक बेसिक डिटेल डालना पड़ेगा विद ओटीपी एंड स्टफ तो मैं एक सेकंड दीजिए उसको डिटेल्स डाल देता हूँ और एक लॉग इन कर देता हूँ तो जैसे ही आप लॉग इन कर लेंगे वंस यू विल बी एबल टू सी इट आउट जो भी आपका सेट बचा रहेगा वहां पे आपको दिख जाएगा या आपने जो कंप्लीट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पेपर आ जाएगा यू नीड टू क्लिक ऑन सिलेक्टिंग अ सीट राइट यू नीड टू क्लियर अ डिक्लेरेशन एंड वंस दैट इज इन प्रोसीड राइट जो भी स्टेट में आपको देना है से फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में मैं देना चाहता हूँ अब मैं सिलेक्ट करता हूँ पुणे एंड सेंटर पुणे के जो जो अवेलेबल है वो मुझे दिख जाएंगे अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा मुझे सेंटर का डिटेल्स दिख जाएगा और पैरेलली आई बी एबल टू सी सम सेंटर डेट्स विच आर अवेलेबल अब एक काफी बार लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपको सेंटर्स पे देखो डेट्स ही नहीं दिख रही सब जगह फुल चल रहा है तो इट इज रिकमेंडेड कि आप एक्टिवली फटाफट अपनी डेट सिलेक्ट करके बुक कर लीजिए जो भी आपका डेट है राइट और नियर बाय लोकेशन का भी मैं दिखा देता हूँ से फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट सिलेक्ट मुंबई राइट कहीं तो खाली मिल जाए भाई यहाँ भी खाली नहीं मिल रहा है ठीक है तो आप देख रहे हो यार सबने खटाखट बुक करके रख लिया है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और एकदम फुल डिमांड में चल रहा है कोई भी सेंटर मुझे ऐसे खाली दिख तो नहीं रहा है राइट तो काफी ज्यादा ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक ये चैलेंज है तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आईसीआई इट्स मच माई रिक्वेस्ट फ्रॉम आईसीआई कि सेंटर्स थोड़े डेट्स बढ़ा दें या सेंटर्स बढ़ा दें ताकि स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े राइट तो ये एक बेसिक डिटेल है रिगार्डिंग द सेंटर्स आउट नाउ लेट अस आल्सो डिस्कस अबाउट कि ये सेट ए सेट बी कैसे आ रहे हैं राइट और कैसे इसको हम अच्छे से क्लियर आउट कर सकते हैं ठीक है तो आई थिंक बेसिक पोर्टल का डिटेल्स आप सभी को क्लियर हो गया होगा इसमें अगर कोई डाउट या क्वेरीज है तो आप जरूर इसको कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं Yes, so now we have two of our students, right? Those who are going to be guiding you out and telling out कि कैसे आपको सेट ए सेट बी क्लियर करना है राइट तो सबसे पहले मयंक राइट आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ बता दो कि आपका कौन सा आपने सेट दिया है और कैसा रहा पेपर क्या क्या चीजें स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए राइट और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़ा सा एक एक ब्रीफ बता दीजिए प्लीज Hello, sir. Hi, everyone. So, I have applied for costing SPM as of now or ओके recently. So, for costing, I have few things which I would recommend for every single student to take care of, so that they could clear it with good marks. So, first of all, the smart. Let's think about one thing, which is smart work outshines hard work. So, you can ask your friends who have applied for costing SPM for the questions which came and prepare them accordingly because as of now the thing is ki there is a pool of 1,000 or 1,500 questions which are going to repeat
in every single exam. So you can take the benefit of that till the time ICR does not, add few more case studies. So accordingly, you can prepare, and I think so that would be sufficient for you. So for me, the average time for the preparation I gave for was for 2 days, and I Okay. think accordingly, you guys can take around 3 to 4 days for your preparation. To grasp all the concepts which are there, to practice few case studies, to uh, gather some practical knowledge, how to solve a practical case study as well. So for costing, the paper is divided into two parts. Part A is strategic cost management, and part B is strategic performance management, which carry equal weightage session wise. For ओके, तो theory, कितने कितने मार्क का पेपर रहेगा और कितने क्वेश्चंस आएंगे, अगर उस पर मयंक आप हाईलाइट कर दें? sir, paper is of 100 marks, and there ओके. will be 50 questions of 2 marks each. ओके. And you need at least 50%, मतलब 50 marks you need to clear the exam. अच्छा, अच्छा, गॉट इट. और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? इज इट ओनली अ केस स्टडी बेस्ड और इट इज बेसिक एंड एमसीक्यू? और थोड़ा सा एक बार उसके बारे में डिटेल आप दे दो. Sir, paper 85% approximately is case study based. मतलब for example, आपको एक case study given होगा, उसके there will be 6 parts, 4 parts या 3 parts, and उसी same case study से you will have to answer those 3 or 4 parts. So इस type से है sir. But when I gave the exam, मेरे को जो एक broad view समझ आया, I'll tell you that. आप पूरे एग्जाम को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो. One is your basic जनरल नॉलेज टाइप. मतलब इफ यू हैव, मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है. मतलब इफ यू हैवंट इवन स्टडीड द कंसेप्ट, यू कैन स्टिल आंसर देम. जस्ट यू हैव टू जस्ट ओके. रीड इट वेरी केयरफुली. The second session I would say was of concept based. If you have gone through the concept, you have read the concept once, you'll able to make sure कि हाँ इसका इस क्वेश्चन का ये वाली लाइन इस सेगमेंट पे फिट होता है. So accordingly you can answer. And for the third part, I would say the practical part. Practical part is completely based upon the formula. So if you have learned the formula, you can easily answer that. But if you haven't, then it will be quite difficult for you to answer that. ओके, गॉट इट. और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कॉस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सॉल्व करना है? और दूसरा, क्या वहां पे कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम हॉल में ले जाना? So calculator is allowed, but just in case if someone is not able to carry the calculator, so the centers provide the calculator as well. कोई issue नहीं है ओके. उसमें. Important topics I would say, जैसे Porter's 5 forces, transfer pricing, uh, target costing, digital technologies, hyper competition, just ओके. in time के questions were frequent. Standard costing के questions were also frequent in the exam. Cost of quality के questions were also there. Z स्कोर के देवर 3 क्वेश्चंस. सो Z स्कोर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, वेरी इजी, मतलब डायरेक्ट आपको समझ आ जाएगा. स्किमिंग पेनिट्रेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चंस वर देयर, जो कि बहुत आसान है, प्रैक्टिकली है. एंड आप एक बार समझोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू आंसर दोस क्वेश्चंस. काइजन कोस्टिंग इज देयर, मैकेंजी 7S is there, value for money, and complex business structure. I think these are ओके. the important topics which you guys can prepare. गॉट इट, गॉट इट. तो ये प्रिपरेशन आपने, मतलब इंसान अगर चाहे, अगर स्टूडेंट चाहे तो वो खुद से कर सकता है, या उसको कोई क्लासेस लेना जरूरी है, या रिवीजन लेक्चर देखे तो एडवांटेज होगा? कैसे करना चाहिए? सर मैंने खुद ही क्लासेस, खुद ही सब कुछ प्रिपेयर करा था. आई डिडंट टॉक एनी क्लासेस, किसी ओके. स्पेसिफिक फैकल्टी क्लासेस नहीं ली थी. सो देर आर फ्यू रिवीजन लेक्चर्स विद आर देयर ऑन द यूट्यूब. सो मैंने उनको देखा, एंड देर आर फ्यू कंसेप्ट नोट्स एज वेल विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. तो एक बार ओके. रिवीजन वीडियो देखा, उसके बाद आई गॉन थ्रू द कंसेप्ट्स. एटलीस्ट एक दो बार आई गॉन थ्रू द कंसेप्ट्स, थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया, देन आई वेंट फॉर द एग्जाम. ओके. एंड आई ओके, थिंक गॉट दैट्स इट. सफिशिएंट फॉर यू. राइट. तो एकदम जो अभी डर बना हुआ है बच्चों के अंदर एसपीओएम का, तो इतना डरने जैसी बात है नहीं, राइट? अगर आप अच्छे से नहीं. प्रिपेयर करें, अच्छे से पढ़ाई करो, राइट, और 5-6 दिन लगा के उसको अच्छे से पढ़ो डेडिकेटेडली, राइट, अगर रिवीजन लेक्चर देख लो, तो आई थिंक यू विल बी इजीली एबल टू क्लियर इट आउट. या एग्जैक्टली, मतलब 500 रुपये दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि यार कि मतलब कुछ भी पढ़ के नहीं जाओ, थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाओ, तुम्हारे एग्जाम है. एक बार दो राइट. दो दिन निकाल लो अपने लिए, पढ़ लो, यू विल बी एबल टू क्लियर इट. ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए, कुछ कोई टफ एग्जाम गॉट नहीं इट. है. Got it, got it, got it. So guys, if you're watching this video, right, I would request all of you, एक डिस्क्रिप्शन में हमने एक फाइल लगाई है जो आपके रेफरेंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट? तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं रिलेवेंट है,
वो सब आपको एक बढ़िया से पीडीएफ फॉर्मेट में दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर से देख लेना भाई, ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस रिलेटेड टू सेट बी। नाउ कमिंग टू द सेट ए, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। राइट, तो विकास, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको लगते हैं जो स्टूडेंट्स को फोकस करने चाहिए? और अगेन द सेम थिंग आउट रिलेटेड टू व्हाट मैं कवर्ड। म्यूट पे विकास, या Yeah. Hello, is it audible? यस Yes, यस। sir. Okay. So I think broadly the things are same what Mayank mentioned, SCMP, that will be figures of 2 months, and there will be 80% of case study MCQs. Just different things that I would like to highlight here are that law being a subject from group one, students generally tend to be confused between whether we should go for lectures or not, because IBS also includes law, which is in group two. So ideally, what I would suggest, I have spoken to a lot of people also, and my friends have also recently appeared for exams as well along with me. So what I would suggest is, if you have law plus you have IBS pending in your group two, go for the classes. I think SPOM law classes are normally between 25 to 35 hours. You can go for any faculty. There are 2 to 3 prime faculties in the market, so you can go for any of them. And other than that, if only law part is pending, so personally, I had not taken any classes, but I studied for like 2 to 3 days, and that is what is sufficient, I think, because I mean, again, it is very subjective, because people are normally, a lot of students are normally taking 4 to 5 days to, study the subject, and then they are also revising. And then again, here in SPOM, luck plays a big factor, because although ICAI has given section-wise weightage, but broadly there are 3 sections. One is corporate, one is directors wala part, and the third is SEBI. So Okay. only these 3 sections, for these 3 sections, the weightage is fixed, and ICAI has also given a sub weightage inside them, but that is not at all fixed, because anything can come from anywhere. That's what I've heard from my friends and my experience as well. So there was a chapter which hardly had around 4 to 6 weightage, but in one of the SPOM exams it appeared for 24 marks. So you cannot really predict anything regarding that. And specific to law, I think limits and penalties are very important, because around 40 to 60% paper is based on that. And Okay. in case you're thinking of skipping any chapter, just don't skip through it, because at least go through the limits and the penalties that are over there. Limits in terms of time, percentage, due dates, or any amount wise rupees. So yeah, and section numbers in law are not at all important, because when it was a descriptive paper back then, it was very important, but now they don't generally go into section numbers and everything. And similar to SCMP, there is also a pool of case studies, around 3,000 case studies, 3,000 questions. So I think instead of focusing on that, according to my experience and students in the market, you should normally focus on notes or the concepts, what we say. So instead of, it's very hard. I mean, you should have very really amazing luck that, one of the case study that you studied should pop up in the exam, but then concepts are limited. I mean, if you study 10 concepts, guaranteed 2 to 3 concepts will be there. But so I think you should focus more on case studies than on the questions or the question bank wala part. Of course, that is just for practice purposes. And other than that, when compared to a normal subject, you should not go and try for 3 to 4 revisions for SPOM. I think one self-study and once reading or just glancing through it is very much fine to clear the exams. After all, we only need a 50. And yeah, and so last thing that I would like to highlight is utilize or leverage the summary penalties that are available in the market. So a lot of faculties and a lot of Telegram channels that you will have uploaded their summary or limit-wise penalties. So I will say, instead of creating your own, just utilize their, it's already right there. So you should just utilize or leverage that for your exams. Got This it. was about the study part. Now Just exam. also wanted to add on, right? When you're going to be solving the questions in SPM, right? I've asked a lot of students. One thing I came to know that many a times you are going to be reading the question first, then you read out the case study. We feel out कि यार कुछ important है उसमें तो, right? तो पहले आप question पढ़े, right? Answer देखें, and then you move to case study. We feel like that is important. So that is also one thing which you guys need to keep in mind. Right, so Vikas, one very interesting thing which I wanted to ask you कि कौन-कौन से important topics है which they need to focus on for preparation? Sure, sir. So there are
I mean, I have sort of created a list of 10 to 15 topics that are normally very frequent and have a lot of limits inside them. So the topics are the turnover criteria for the women directors, and the second is independent directors wala thing. Third is remuneration. Remuneration, where there are a lot of limits, 5%, 11%, and all of that. And next, there is a Nidhi company wala thing. Then there is SEBI ke quarterly dates when there is annual report, quarterly report. There are a lot of limits inside them. Then Okay. there is dormant companies, small shareholders. IBC mein there are appointment of responsible party, appointment of RP, and then SEBI ke penalties are there. Then there are SEBI ke insider trading ke penalties. So yeah, these are broadly all the important topics that one should at least cover. Got it. Got it. Got it. So guys, what we'll do, right? We'll share the list of important topics for SPOM, right? Set A, Set B. आपको डिस्क्रिप्शन में एक बढ़िया सा फाइल मिल जाएगा, तो उसको अच्छे से देखिएगा, ताकि एटलीस्ट आपको जो आप एबीसी एनालिसिस जो बोलते हैं, राइट, इनडायरेक्टली आपको वो थोड़ा बहुत मिल जाएगा वहां पे, राइट. एंड इसके साथ साथ, राइट, इफ यू हैव गाइस एनी मोर क्वेरीज रिलेटेड टू द टॉपिक एंड स्टफ, राइट, और एनीथिंग which is there, you can just put it out in the comment section. We'll be happy to help you out. राइट. बैंक आपको कुछ अगर एड ऑन करना है या कोई प्रो टिप दे दो यार, तुम तो क्लियर हो गए बढ़िया से, तुम मजे कर रहे हो, राइट. बाकियों को भी बता दो कुछ, वो भी क्लियर हो जाए फटाफट, ताकि वो भी एंजॉय कर सके. सर आई वुड से कि अभी ना बेसिकली एक ऐसा चल रहा है कि लाइक एसपीएम बहुत डिफिकल्ट है क्लियर करना, ऐसा कुछ भी नहीं है. थोड़ा सा थोड़ा सा तो यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स. ऐसा मैं सी आई अंडरस्टैंड कि अभी हम सबने पेपर दिए और हमें थोड़ा बहुत चिल करना है, रिलैक्स करना है, बट एक लास्ट बार देना यार, आई गेस कि दे के खत्म करते हैं. सो जस्ट एक दो दिन की बात है, जस्ट टेक आउट 1 या 2 days फ्रॉम योर लाइफ, योर बिजी शेड्यूल आई वुड से, और इसको थोड़ा कंसेप्ट वाइज पढ़ के एक बार क्लियर करो. इट्स वेरी इजी कंपैरेटिवली. आई थिंक सब क्लियर कर दे, कुछ इशू नहीं है. राइट, राइट. और इतना भी वो मत रहना कि बीकॉम का पेपर नहीं है भाई, थोड़ा सा पढ़ के जाना, राइट, नहीं तो फिर हाँ वो मोए मोए फीलिंग आएगा आपको उधर. एंड आई सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट हु 3 hours, आई थिंक कंपलसरी आपको पूरा बैठना पड़ता है, वहां जाने भी नहीं देते हैं, और काफी स्टूडेंट या 1-1.5 घंटे में खत्म भी कर लेते हैं, विच इज देयर. So that is what it is. But guys, we wish you all the best. But if you have any more queries related to SQL, put it out in the comment section. We'll be happy to help you out. Right. Thanks, Mayank. Thanks, Vikas, for joining us and guiding the students out. How based on the strategy, how you have cleared it out. I hope others will also clear it out. और जरूर बताइएगा बाद में कि ये strategy आपको help करेगी. Thank you, थैंक यू sir. सर, थैंक यू.